Okay. Well, hello everyone. We are back. मेरा डराने का कोई मतलब नहीं था और ना ही मैं कोई अश्लील हरकत करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस अब फ्लो में निकल गया। बट यस, वी आर बैक विद स्पाइसी स्पेक्ट्रम पॉडकास्ट। ये वीडियो स्पाइसी स्पेक्ट्रम चैनल पे तो जाएगा ही, नारद न्यूज़ चैनल पे भी जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। बट या, होप एवरीवन हैज हैड अ ग्रेट, आई थिंक अबाउट एक महीना हो गया हमें वीडियो डाले हुए। वी शुड बी गेटिंग मोर रेगुलर अबाउट दिस, बट या, होप एवरीवन's हैड अ ग्रेट मंथ। एंड अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री में हैं तो आपका हॉलीडे सीजन शब्बो शबाब पे चल रहा होगा, सो वी होप यू आर गेटिंग वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आई होप आप सब अगर नौकरी परस्त लोग हैं तो आपकी कंपनी आपको थोड़े कुछ दिन ऑफ दे रही है। मेरी तो मुझे ऑफ दे रही है कंपनी, तो आई एम लुकिंग वेरी मच फॉरवर्ड टू दैट। ओके जेडी, तुम बताओ क्या प्लान है तुम्हारे हॉलीडेज के? तुम तो अभी कुछ हॉलीडे नहीं। से वापस आए हो, बट फिर भी बता दो अब अगली हॉलीडे का क्या प्लान है? हाँ, मैं इंडिया होके आया 3 हफ्ते, खूब मज़े करे, वापस आया हो। फिर मुझे भी अभिजीत की तरह ऑलमोस्ट एक हफ्ता ऑफ मिलेगा कंपनी से, विच इज़ नाइस। थोड़ा रिकवर करूँगा, थोड़ा नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करूँगा। बट हेलो अगेन एवरीबॉडी, काफ़ी टाइम हो गया। अभिजीत तो हफ्ते में 2-3 करता रहता है, बट मैं इतना नहीं दिखता हूँ। तो हाँ, वेलकम अगेन, थैंक यू। एंड आई थिंक हाँ, 1 महीना तो हो गया। वही एक हमने लास्ट जो किया था वो मैंने एक्चुअली इंडिया से किया था। और अब मैं आपको सीक्रेट बता दूं कि तब मैं बहुत नींद में था, बट किसी तरह मैंने कर दिया था। बट गुड टू बी बैक। एंड अभिजीत तो अपना चैनल नारद न्यूज़ करता ही है। आई वांट टू अनाउंस कि मैं भी अगले हफ्ते से आई विल ऑल्सो स्टार्ट स्ट्रीमिंग, और मेरा चैनल भी आ जाएगा। उसके बारे में डिटेल्स आएंगी। बट हाँ, लेट्स कंटिन्यू अभिजीत। हाँ, तो अगली बार से व्हाट वी कैन ट्राई इज टू स्ट्रीम पैरेलली ऑन ऑल द थ्री चैनल्स जब हम साथ में होंगे। तो या, ऑडियंस को हमेशा यू कैन वॉच वेयरएवर यू फील लाइक, राइट? क्योंकि कोई भी आप चैनल पे पहुंच जाओ, कंटेंट आपको मिलते रहना चाहिए। दैट्स आवर एम। सो चलिए आज का शुरू करते हैं। एक्चुअली आई थिंक फर्स्ट न्यूज़ ये जेडी ने ढूंढी है, एंड आई वांना, या, आई वांना yield the floor to him because ये काफी इंटरेस्टिंग चीज आई है। सो लेट्स गो विद हमारा वॉयजर 1 का टॉपिक शेयर। चलो आ गया, गो फॉर इट जेडी, बताओ ये क्या हाँ, चल रहा है? यस। सो आई डोंट नो, काफ़ी लोगों को पता होगा कि वो थोड़ा टेक्निकल है। तो वॉयजर 1 एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था नासा ने 1977 में। और बहुत फेमस है, उसने बहुत चीज़ें करी थी, उसकी डिटेल्स में भी जाएंगे व्हाई इज़ इट सो फेमस। बट मेन हेडलाइन हेयर इज़ कि इट्स अबाउट 1 लाइट डे अवे फ्रॉम अर्थ। अब वैसे सुनने में आया कि क्या 1 लाइट डे, 1 लाइट डे इतना दूर तो नहीं होता, बट एक्चुअली होता है। 1 लाइट डे इज अराउंड, लेट्स से किलोमीटर में अगर देखें तो अलॉट, probably like more than million, uh, more than million, I would say. uh, 1 2 3, it's like more than a billion miles away or something like that. बहुत दूर है। तो कितना दूर है वॉयजर? वो प्लूटो के भी दूर है। वो अपने सोलर सिस्टम से निकल चुका है। इट्स इन व्हाट इज कॉल्ड स्टेलर स्पेस। वहाँ पे है, मतलब लिटरली सोलर सिस्टम से निकल चुका है और वो बस घूम रहा है इन मिडल ऑफ नोवेयर। So that's why I brought this story up. It's pretty interesting.
So Any thoughts? for those people who want to understand just how far is one light day, that is 25.9 billion kilometers, billion with a B, which means this is 173 astronomical units. Astronomical unit hota hai, it's basically defined as the distance from the Earth to the Sun. So one astronomical unit is the distance between the Earth and the Sun, which is put at about 149, 150 million kilometers. So अगर आप astronomical units में देखें, so that's about 173 astronomical units. And just to how far is Pluto from the Sun in AU? So Pluto's distance from the sun varies, but yeah, I mean, average distance is about 40 AU. मतलब Voyager 1 Pluto के काफी दूर है comparatively, but basically this is about Pluto's average distance about 23% of a light day. तो मतलब Pluto के तो खैर काफी आगे पहुंच गया है Voyager 1, but it's much farther from Pluto. Actually, I'm just curious, how long does it take data to travel from current position of Voyager 1 to the Earth? ये मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, just how long it takes for a signal. As of the most recent measurements, Voyager 1 is so far from the Earth that radio signals take about 23 hours one way. एक दिन तो आरे भी लग जाती है. And a signal sent from Voyager 1 to Earth travels at the speed of light. Because Voyager 1 is currently billions of kilometers away, the light travel time is about 23 hours one way. So basically, it takes about a day for data from Voyager 1 to show up. इसका क्या है कि after nearly 50 years in space, NASA's Voyager 1 is about to hit a historic milestone. By November 15, 2026, it will be 16.1 billion miles away, meaning a radio signal will take full 24 hours to reach. For context, a light year is distance. ये तो सब ठीक है, चलो. Launched in 1977 to explore Jupiter and Saturn, entered interstellar space in 2012. हाँ, बेसिकली सोचो यार, it travels at 11 miles per second. यार पर सोच भी नहीं सेकेंड। एंड मुझे सकते. ये स्टोरी इसलिए इंटरेस्टिंग लगती है बिकॉज इट इज़ द फर्दरेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट एवर। मतलब इससे दूर कोई ऑब्जेक्ट इंसान ने भेजा नहीं है, और सरप्राइजिंगली ऐसा ऑब्जेक्ट जो अभी भी जिससे बात होती है। um, हाँ. उ- मतलब इतना क्रेजी है कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो जो हमारा स्टार है सन, है ना, और जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सबसे पास में जो है, पास इन कोट्स, Yeah. उसको पहुंचने में अभी भी वॉयजर को लगेंगे 74,000 ईयर्स। तो उसी दिशा में जा रहा है। Wow. I mean, the thing is, the probe's distance makes every instruction a patient exercise in deep space operations. To reach our closest star, Proxima Centauri, even at light speed, would take over 4 years, showing just how tiny a light day is in cosmic terms. मतलब अगर आपको Proxima system के बारे में और जानना है, it's actually a system of 3 stars. उसमें I think Proxima Centauri is there is basically it's two heavenly bodies, two stars which sort of orbit the imaginary center point, and another star is basically a little farther off in the system, but it's also part of that same system. And some of the planets in this system are considered, close contenders of the Earth and everything. So अगर आपको if you want to learn more about the latest happenings in space and everything, you can always check out a channel called Astrum. He's an Australian YouTuber and he's been making videos for a very long time on this topic. तो उसके videos मुझे अच्छे लगते हैं. He recently did another video on a body called, क्या था वो?
uh, मैं फटाफट देख के बताता हूँ सबको, because that's, and if you just want to have, even watch something where अब हाँ, Eris is another sort of exoplanet which is revolving around the sun, even at a much farther distance than Pluto. एंड एरिस की जो ऑर्बिट है, जैसे ये प्लेन मान लो आप, ये सन है, तो एरिस पूरा ऐसे डायगनली घूमता है, एंड द डिस्टेंस Wow. बिटवीन द पेरिहीलियन एंड द एपहीलियन इज मैसिव. तो उस पे भी Wow. अभी एस्ट्रम ने एक वीडियो डाला है, मैंने पूरा नहीं देखा, इट्स अबाउट 20 मिनट्स लॉन्ग, and he has detailed videos on anything you can think of, like Jupiter देखना है पास से, Saturn देखना है. When one of the recent expeditions which reached Pluto, जब photos आई थी उस पे भी पूरा वीडियो है. So anyway, Voyager 1, most the farthest away object, man-made object from the Earth. And again, it's, I think, something to look at is how sturdy and durable is the construction of this spaceship, right? Maybe not spaceship, but just satellite. कि मतलब अभी भी चल रहा है यार, 1977 से सब चल रहा है. लाइक हमारे तो आईफोन 5 साल चल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है. तो ये वॉयेजर 1 है जो जो खराब होने का नाम नहीं ले रहा. सो दैट्स, दिस इज डेफिनेटली, आई थिंक, आई गेस ऑन अ वेरी माइनर. हाँ, ये वाली जो फोटो है, दिस इज़ वेरी फेमस. इट्स कॉल्ड द पेल ब्लू डॉट इमेज ऑफ अर्थ. ये ली थी जब आई थिंक आई डोंट नो कौन से प्लैनेट, आई एम थिंकिंग नेपट्यून या प्लूटो के पास पहुंचा था वॉयेजर. तो साइंटिस्ट ने कहा एक बार टर्न करके एक फ़ोटो खींचते हैं, या देखते हैं कि क्या आता है. एंड दे जस्ट टुक अ पिक्चर. एंड देन जब प्रोसेसिंग के बाद आया तो उनको दिखा कि ऐसी लाइंस थी खूब सारी, और एक छोटा सा ब्लू डॉट दिख रहा था, लाइक वेरी फार अवे, एंड दैट्स अर्थ. तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द पेल्ड ब्लू डॉट image, because earth appears as a blue dot. And it's funny क्योंकि मेरी जो मॉम है, उनकी गैलरी खुली थी 1 साल पहले, और उसका नाम भी इसी पे ही पड़ा है. उसका नाम है उसका नाम है ब्लू डॉट लाइब्रेरी, ब्लू डॉट गैलरी, सॉरी. हौस खास में खोला उन्होंने, तो इसी Oh के नाम पे. wow, nice, nice. Huh, so you can imagine how small the Earth is, how small everything we are doing on this. So it basically comes down to, everything that's happening here is basically not worth much. It gives you perspective on life and on everything that we do every day, on all the fights and everything that's happening. So yeah, let's see till when Voyager 1 keeps sending us signals and whatnot, because this would be something to, again, if we can just start making objects that are that durable, that would be lovely to see. चलिए इसी के साथ अगले टॉपिक पे जाते हैं, which is ये हमारा, let's go over to Netflix to acquire Warner Brothers. As you guys know, I think JD update us on this, because I haven't followed it as closely. I know इसमें Paramount पे बीच में आ गया था, फिर अब I think Warner Bros के साथ final deal हो गई है. So yeah, give us an update. हाँ, सो फर्स्ट आई टेल यू लाइक एग्जैक्टली हुआ क्या, देन वी कैन टॉक अबाउट द मिर्च मसाला. बेसिकली हाँ, नेटफ्लिक्स $82 बिलियन दे रहा है. इट्स अ स्टॉक एंड कैश डील फॉर वार्नर ब्रदर डिस्कवरी. तो वार्नर ब्रदर डिस्कवरी में क्या क्या आते हैं? इट्स वार्नर ब्रदर्स, तो मतलब तुम्हारा बग्स बनी और ये सब. इट इज़ डीसी, सो सुपरमैन फ्रेंचाइज. इट इज़ HBO, तो मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स और लास्ट ऑफ अस, ये सब. हैरी पॉटर,
uh, and the Discovery Channel also. Discovery Channel, yaad hoga Abhijit, like we used to watch a lot, like nature kind of stuff. So all of that is in this, and it's interesting because यही एक bid नहीं थी, और भी bids हो रही थी, but Netflix won. But we can go into more details about that. Basically, एक साइड है Netflix और दूसरी साइड है Paramount. तो Netflix तो खुद ही फंड कर रही है, बिकॉज Netflix आई डोंट नो अभी क्या कितनी वर्थ है. Netflix इज एटलीस्ट 200 or 400 billion. Let's see. So market cap is 430 billion. So they can definitely afford it. But इनका एक और rival है who is trying to purchase, which is Paramount, which is owned by um, जो भी Oracle का head है उसका बेटा. I don't even know the name, but he has a rich dad and he has some Saudi buddies, and they are also trying to snap up not just Warner Brother Discovery, but also their TV channel, and they're very interested in CNN. So that's it. Abhijit, your thoughts? Well, it looks like ek to I just quickly did a Netflix search. Stock split हुआ है क्या? About 1:10. I'm Oh, I thinking. didn't know that, but क्योंकि the price is now down to 95. कहाँ तो 1000 probably, के ऊपर पहुंच गया था. probably, yeah. So I'm curious to see when did the Netflix stock split happen. Man, this might be a good time to actually then get into next. 10 for 1 split on November 17th, 2025. Yes. The 10 to 1 split ho gaya tha, because the stock was getting to like $1,000. And I mean, I would personally feel ki, okay, if anyone's looking to buy Netflix right about now would be a good time. Actually, जब मैं MBA कर रहा था, we had done a case on Disney. And the whole case was structured around why Disney was more successful compared to the other ones. उसमें फिर वही आपके Warner Bros, Metro Golden Mayer Pictures, Paramount. Lionsgate, ये सब का analysis था. And in those days, Disney was the king, right? They were making one hit after the other. So it made sense to have a business case study on them. And nowadays, I'm not so sure. Yeah, hashtag Rachel Zegler, my favorite all time. Yeah, kya yaar. So anyway, now with Netflix buying Warner Bros, I think Warner Bros के पास जो IP है, that is that is truly magnificent, right? Because Warner Bros has Harry Potter, from what I understand. Then they have Discovery Channel, जो बच्चे देख देख के बड़े होते हैं. Um, Game of फिर Thrones. Game of Thrones, because Bros now owns HBO, and with HBO you get some of the best TV shows to have ever come on TV, right? The Wire, uh, Game of Thrones भी है उनके. उन्होंने I think Spartacus इनका नहीं था. But anyway, I think I'm just HBO googling has. कि Hmm, top shows ever. क्या क्या है? तो do you want to hear? The हाँ. Wire, The हाँ. Sopranos, Sopranos is also HBO. हाँ. yeah, Curb Your Enthusiasm, Game of Thrones, obviously, True Breaking Bad किसका है? Detective, Breaking Bad is AMC, अच्छा अच्छा, okay okay. Hmm. हाँ, Anyway, Westworld, Silicon Valley, Rome, Silicon Valley was another great show from HBO. मैंने मतलब 3 season देखे थे, very addictive. Entourage. Entourage was another one. Entourage was just not my cup of tea. मतलब I didn't. ठीक है, मैंने I saw I think first 2 seasons. उसके बाद I just never kept up with it because यार ठीक है, I got the point, right? वो पूरी मार्क वॉलबर्ग की स्टोरी उन्होंने बनानी थी तो उन्होंने बना दी. Um, I don't watch too many shows, but Warner Bros has so much intellectual IP. Now imagine if Harry Potter is tied to Netflix forever.
That's crazy. That's That's like, crazy, right? Like वो तो ऐसी ज़्यादा बिक्री हो जाएगी. There are literally YouTube channels that are running just by coming up with Harry Potter theories, right? bhai, I Harry mean, Potter as a IP probably earns $1 or $2 billion per year. per year, exactly. And then there is obviously, I'm pretty sure there is that kind of material on Game of Thrones as well. So just by having the two biggest fantasy world IPs, I think बस फिर यही रह जाता है कि the only one that Netflix doesn't have direct access to is actually Star Wars. And if you want to Oh, call Star Trek, but but Star Wars is with Disney. but we अब Disney forgot about कितने one दिन thing. टिकती है तो yeah. So Disney has Marvel, now Netflix will have DC, DC Comics, Oh, because that's with Warner only, no? Oh, wow. Superman. But the Um, problem is DC, the DC universe is rubbish compared to Marvel. I mean, but it is still एक earning money. It's मतलब not, बैटमैन है which is like a bhai. credible superhero. बाकी ग्रीन लैंटर्न मतलब कर आरजेडी है वो क्या राजा धोखा मतलब लाइक लैंटर्न अभी ठीक है यार हाउ डू कुछ आई भी टेक अ चल लैंटर्न सीरियसली लाइक हाँ दे but हैव सुपरमैन बट वो ये वो चड्डी बाहर पहनता है तो मैं कैसे उसको सीरियसली लूं बंदे को हाँ बट वही है ना कि अगर अगर मार्वल अर्न्स $2 billion a year, even if this earns 500 million, that's still, a lot. हाँ मतलब वो तो फिर there is it depends on what Netflix decides to do because Netflix does have the knack of producing good shows at least till recently because I mean we got to remember House of Cards before Hmm. Kevin Spacey's scandal became everything that Kevin Spacey was ever known for but you know House of Cards was good Orange is the New Black was good Stranger Things final Stranger Things season. was Hmm. ठीक है वो तुम लोग ही देखते हो भाई I can't handle it. Like I saw one episode, I'm like, ये मैं क्यों देख रहा हूँ? Then I just, yeah, I know it's controversial कि you don't like Stranger Things. No, I don't. I don't get it. ये क्या एलियन आ गया ये हो गया वो हो गया तुमको एक एलियन मिला नहीं है आज तक कुछ भी बस बनाए जा रहे हो मतलब फिर हाँ तो एनीवेज आई मीन दैट्स व्हाई 82 बिलियन दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा आईपी और कहीं है नहीं, खाली डिज्नी है। और कहीं और ऐसा आईपी अब कभी आएगा भी नहीं मार्केट में, ये इसीलिए $82 बिलियन दे रहे हैं। इवन दो आई थिंक अगर देखा जाए फेयर वैल्यू तो इसकी मेरे ख्याल से 30-40 बिलियन होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो फेयर वैल्यू तो फिर वही हो गया ना कि फेयर वैल्यू इज बेसिकली अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ सेइंग जिसकी लाठी उसकी भैंस तुम पैसा दे सकते हो वो बन गई फेयर वैल्यू जो पैसा नहीं दे सकते बट उनके लिए तुम बोल लो अनफेयर वैल्यू लाइक सी आई मतलब दो सीएफए एग्जाम पास किए हैं तो आई कैन स्पीक विद अ लिटिल बिट ऑफ अथॉरिटी ये बस यू कैन मतलब यू कैन there is no science to it. You can you can value assets, but how do you value assets of Warner Bros? They have massive studios which will be स्टूडियो worth ऑल्सो या that those are their physical assets. आई But वेंट टू देयर स्टूडियोज कपल ऑफ मंथ्स अगो। बहुत अच्छा स्टूडियो, एकदम मतलब एलए का प्राइम लोकेशन पे है। हाँ हाँ वो तो सभी ये तो सब प्राइम पे ही है प्राइम लोकेशंस में ही मिलेंगे बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग as far as the physical assets is concerned they have studios and the equipment thereof right but everything else is intellectual property फिर वो जितने दिन चल रही है उतने दिन चल रही है आप बोल सकते हो कि लेटेस्ट मूवी ने इतना पैसा कमाया पोटेंशियल पोटेंशियल आप कैसे मेजर करोगे स्टार वॉर्स की भी पिक्चरें पिटी है ना ऐसा थोड़ी है सो स्टार वॉर्स फ्रैंचाइज की भी मूवीज पिटी हैं सो आई डोंट थिंक देयर इज अ राइट और अ रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू दिस ठीक है नेटफ्लिक्स कैन अफोर्ड इट ऑल आई एम सीइंग एज एन एंड यूजर इज of Netflix that subscription fees are going to go up. They're Probably. going to now just basically ये हो जाएगा जैसे there is another platform called Viki. They charge you a certain amount of fee to watch content which is for their platform. Then they have a partnership with Cocoa TV. तो अगर आपको वो add on चाहिए तो वो और पैसे मांगेंगे. So Netflix will probably do something like that. If you want to watch
all the Warner Bros content on a Discovery Channel content through the Netflix portal, then you'll have to pay more money. That's what it's going to come down to. And I think in a very lopsided way, there is a market opening up for a service which aggregates all these streaming services and then lets you pay one bill so that you can watch anything on any of them. And guess what that was? That is basically cable TV, but on a streaming platform. मेरे हिसाब से that's We are what back to square all one. of these, yeah, we are basically, वो हमने पूरा सर्कल देख लिया है कि हमने केबल टीवीज को गाली दी कि ओ ये चैनल पे ऐड आ रहे हैं, चैनल्स उतने नहीं है। तो फिर जब 1000 चैनल हो गए, अब जब हर चैनल पे ऐड ही ऐड आ रहे हैं तो स्ट्रीमिंग आई। अब स्ट्रीमिंग में हर इंसान स्ट्रीमिंग में घुसा हुआ है, तो अब आप अगर आपको सारे स्ट्रीमिंग एक जगह पे देखने हैं, then you can have a platform which just aggregates all these streaming platforms. But the challenge with that one would be कि okay, how do you manage the ads? अभी मैंने अपना Amazon का थोड़े दिन पहले अपग्रेड किया था. I was like, I just want to go ad free on Amazon because Amazon Prime has really good Indian content. In fact, in my opinion, better than Netflix. So जब भी कभी इंडियन कंटेंट देखना होता है, आप देखोगे कोई भी हिंदी मूवी में जाओगे, मोर ऑफ्टन देन नॉट द स्ट्रीमिंग पार्टनर इज Amazon. बट या उनको भी ऐड हटाना है तो और पैसे दो. तो I don't blame the platforms for having ads, but obviously फिर लोग चालू हो जाते हैं, oh this is very greedy, they don't actually need it. No, but capitalist market है, वो चार्ज कर सकते हैं, people are paying for it. तुम्हें नहीं पे करना मत करो. So yeah, I think bottom line is Netflix का प्राइस बढ़ने वाला है आपके सब्सक्रिप्शन का. Be ready for it. Uh, as far as this merger is, मतलब ठीक है, उनको खरीदना है, वो खरीद रहे हैं, उनके पास पैसे हैं. I don't think it's undervalued or overvalued because I have no understanding on how to value a production house. That's just not my forte. इस पे मैं क्या ही बोलूँ. बस हमें ये पता है हैरी पॉटर आ जाएगी नेटफ्लिक्स पे, जब मूड करेगा देख लेंगे. हॉलीडेज के पहले आ जाए तो बेटर है. तब तो देखने का मजा भी आएगा. काम कर रहे कब हैरी पॉटर देखेंगे. So okay, I guess let's move to the next one for today. मैं इसको actually यहाँ ले आता हूँ, so it's easier to share. Oh, okay, stop ही करना पड़ेगा. Okay, if I can just upload it. उसमें क्या है? Can just copy paste the URL maybe. एक्चुअली मैं इसमें ना सीधा डायरेक्ट अपलोड ही कर सकता हूँ. सो मैंने अच्छा. तो अपने आर्टिकल का पीडीएफ डाला हुआ था ना, so I'll just upload it and it'll show up. तब तक के लिए we can just put ourselves on the stage. एक्चुअली मुझे ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेमिंग कंसोल मिला. दिस इज कॉल्ड द नेक्स्ट, क्या नाम है इसका? ओह, आई थिंक ये जाएगा ही नहीं. या आई नो व्हाट विल हैपन. रिमूव कर दो, चलेगा. ओके, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. Stop. Now I will share again. Window, ये वाला. Okay. So basically, ये Wall Street Journal पे मुझे मिला. I was trying to look for some interesting topics. The hottest toy of the year is made by a tech startup you have never heard of. I don't know if it's the hottest toy or not, but I definitely feel the market is probably more ready for it than it was before. I don't even think this is entirely original because Microsoft ने एक product निकाला था. It was called the Kinect. अच्छा, so this looks It's at kind of the like that, images, yeah. body and all. So it basically tracks the body, and you see some interaction with the game on screen. ये वो है. Basically what your Oculus and Meta glasses and all they do, right? They have those remotes and you're pointing them, you're jumping around the room to play a game. ये basically वैसा है. Their niche is actually okay. This company is called Nex.
After several years, they decided it was time to pivot. Okay, so it looks like a Rubik's Cube. So they have a very interesting design to it, which is a part of the appeal. It's basically priced at $250, and that's their primary niche. That it's cheap, but yeah, it comes with an annual subscription of $90, which is actually not bad. $90 to play all their games on whatever game store they have. Um, it's also marketed to people who aren't in the habit of buying gaming systems, families with young children. So basically, what this company is saying, okay, parents, you are sick and tired of having your kids always be sitting at home playing on a PlayStation, Xbox, whatever, Nintendo. So here is something which will make them move around a lot, right? तो उन्होंने इस thought process से इसको बनाया है. But again, this has been done before. But Microsoft Kinect was for anyone who had an Xbox. I don't know if they ever had a very targeted audience for it. Here they are saying, okay, you don't have to worry, parents, even if your kids are not leaving the house, they can actually just continue to play video games through this console, but they can also get some physical activity out of it. So that's how they are positioning themselves, which I think is which I think is very relevant, because what most of the time parents face is how much are you going to stop your kid from uh, from all the digital exposure, right? एक time के बाद वो they'll always find a way to get to it. आप child lock लगा लो, आप कुछ भी कर लो, they know how to bypass things. So okay, instead of trying to continuously put in restrictions, parents can say, okay, you do it, but you play on this one. Let's see. It looks like their sales have been pretty staggering. It actually worked. So it looks like the position has worked. 2 years ago, the company sold about 5,000 units of the playground. Last year, the number was roughly 150,000. This year, it's on track for 600,000. Before its pivot, Next did about 3 million of annual revenue and wasn't profitable. This year, the company is projecting more than 150 million of sales and says it's on pace to finally break even. So maybe the company is not profitable, but they're claiming that they will break even by the end of this fiscal year, which I think is basically going to land up with the calendar year as well. Black Friday, Playground seemed to come out of nowhere as it flew off the shelves in Walmart, Target, and Best Buy, blew up in TikTok store and soared to the number one spot. That week, this previously unknown system ranked third overall in the US hardware unit sales, ahead of Xbox, which is wow, behind only PS5 and Nintendo Switch 2. So it looks like it's made its waves. It's got its spotlight. I think the challenge they will face is how to continually come out with new games. JD, what's your opinion? You are a gamer, right? नाम क्या है? I mean, I'm a pseudo gamer. I'm a gaming enthusiast more than a gamer. बट हाँ, मतलब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि नया कॉन्सेप्ट नहीं है. निंटेंडो स्विच सबसे बड़ा गेमिंग कंसोल है फॉर किड्स. Right. बट इन्होंने अच्छा नीश निकाला, लाइक वेरी यंग किड्स और PG-13 टाइप गेम्स और सिंपल टू सेटअप. और इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये खाली ये 250 चार्ज करते हैं कंसोल या जो भी है इनका सिस्टम उसके लिए. प्लस दे हैव लाइक सम फी आल्सो, आई थिंक Right. ईयरली फी या कुछ है, तो वही सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है. तो दिस इज गुड. आई थिंक दे फाउंड अ गुड नीश. बट अब उन्होंने, अब वही है, टेक में हमेशा यही होता है, अगर तुम्हें कोई बहुत बढ़िया नीश मिल जाए जो बाकी लोगों ने देखा नहीं तो बस सब लोग कूद के आ जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफेंसिबल मोट. है ना, कल को निंटेंडो चाहे तो ऐसा निकाल दे दो Mhm. सेकंड में और वो That's होने लग true. जाए.
ये बस इन्होंने अच्छा नीश इसलिए निकाला क्योंकि $250 पे अभी कोई गेमिंग कंसोल नहीं मिल सकता, PS5 नहीं, स्विच भी नहीं, कुछ नहीं मिल सकता जो ऐसे तुम लगा सकते हो। तो अच्छा है, इन्होंने मतलब अच्छा कर तो दिया है। लेट्स सी हाउ फार दे गो, हु नोज, मे बी समबडी विल बाय देम आउट, बट it's good. I have no issues with this. Actually, they can, they'll have to differentiate themselves with the type of games they come out with. जैसे Nintendo के games में you will not see the most cutting edge graphics like you will see with PS games or Xbox games. They look very cartoonish. उनका anime culture से ही वो सारे characters लगते हैं ना, मारियो वारियो, जो मारियो is I guess not Japanese but Pokemon and all, but they have very good sort of backstories to the characters, very funny backstories. You can do a lot in the games, but it looks very like ये जो कंप्यूटर टाइप के क्या कहते हैं, ये सब जो आरपीजी गेम्स होते हैं जो ऑनलाइन चलते हैं, जिसपे you'll get these ads on Instagram, or ये गेम डाउनलोड कर दो. It looks very much like that. It's more refined. It's more, it has more finesse. But on the other end of the spectrum, you have PS and Xbox, which are more about the sophisticated gaming universe, right? Ki they're trying to make it as real world as possible. मतलब they're trying to say कि Call of Duty असलियत में होता है. तो और for that matter with Halo, Overwatch and all these games, they keep getting more and more realistic. They also get more difficult to play. And then the whole idea is that you're trying to immerse yourself in an experience which is entirely fictional but feels very real. Nintendo games are fictional and they feel like fiction. With this kind of a, I mean, if any of them ever listen to this video, right? एक बहुत पहले there used to be a website called miniclip.com. They I used to remember. have all these continuous games. जो सबवे सर्फर जो पॉपुलर हुआ है, मिनी क्लिप पे एक गेम होता था, उस पे वो एक छोटी सी, there used to be some bird or something running on a wire, bird on a wire. It was literally called bird on a wire, and you had to keep switching between wires to like avoid crows and everything. वो कॉन्सेप्ट वहां से आया, फिर टेम्पल रन ने लिया, फिर सबवे सर्फर्स ने लिया. So they could always think of these kind of continuous games which encourage physical activity and then build it into their gaming universe so that people buy this console just to be able to continuously exercise and have fun at the same time. अब आप सोचो, आप भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, आपकी स्क्रीन पे आपको लग रहा है कि वो आपको बस you have to jump side to side, you get a lot of activity. Obviously then they'll have to maybe tie up with some sort of a treadmill company or something, one of these sports equipment companies where they can keep running and they can jump. They'll have to come up with some sort of a solution, but that could be somewhere where their games could be useful if they continually want to target the audience for the reason they are targeting them. Like that's what I would say. Personally, I don't know if I'm going to go ahead and buy it. मतलब मैं तो अभी भी Nintendo Switch, मेरे को तो पोकेमॉन खेलना है इसलिए. और पोकेमॉन आईपी Nintendo कभी किसी और को नहीं देगा. So By yeah, that's Nintendo, I would say again is a IP company that also happens to make video games. Actually, उनके exactly. पास क्या क्या IPs है? पोकीमोन, ठीक है, मारियो, जेल्डा, ये तो टॉप 3 हैं। और टॉप 10 में भी बहुत सारे हैं जो जापान में बहुत फेमस है। अभी एक्चुअली मेरा बहुत शॉर्ट लेओवर था जापान में, तो मैं निकला Hmm. था और मैं आसपास घूमा था टोक्यो में। और भाई साहब लाइक इतना फेमस है निंटेंडो, इतना इनग्रेन्ड है जापानीज कल्चर में कि भाई सबवे का ऑफिशियल मैस्कॉट वहाँ पे इज ऑल्सो लाइक ओन्ड बाय निंटेंडो और समथिंग लाइक दैट, सो इट्स क्रेजी। और उस पे Wow. गेम्स भी बनाए हुए हैं, तो मतलब अलग ही लेवल पे है जापान। So, I mean,
let's see how far this company goes on its own. To JD's point, they'll probably get acquired also, and someone will be looking at it, right? कि एकदम से अब ये एक आया है gaming console, सबको चाहिए. Either they'll try to make their own crash and burn, or they might just get successful, or they'll just try to buy this company. And let's see. And in 20, I wrote about, okay, this looks like this person already knew. Next team, Nexus team in San Jose realized there was a ceiling on the market for any basketball shot tracking app. Acha, theek hai, was talking about how they started. The startup also noticed users more engaged on iPads than they were on iPhones, and engagement peaked when their devices were connected to TVs. The bigger the screen, the bigger the retention, which makes sense. Okay, Lee grew up. ये सब तो ठीक है, उनकी history विस्ट्री दे दी. Yep. Next, playground unit quarterly sales. So numbers speak for themselves. 2020, as recently as 2024, fourth quarter mein they saw again because of vacation, holidays, and everything. And then it's been on rise. Like it's third quarter to fourth quarter 2025 method, it's just become a boom. And again, in 1 year, when Sony targeted 25 million sales for PS5, the playground sold 5,000 units. Okay. I think, yeah. If either of, okay, this looks like this is one of the games of this console. तो ये एक photo है यहाँ पे. And again, it looks like they've already understood that, right? That they'll have to sort of come up with these Mario type of games where they're continuous in nature so that you're continuously physically exercising yourselves, but you're also enjoying playing a game. Okay, guys, अगला topic लेते हैं. Let me remove this. OpenAI लेना है JD? OpenAI का brilliant valuation. Let's do it. Let's do that. Okay, चलो इसको stop करते हैं. OpenAI. We can keep this one short because Yeah. बहुत बोला भी हुआ है इस पे. मतलब this is more like comic relief at this point. हाँ, let's put our कुछ भी point चल of रहा है view. valuation पे यार. मतलब OpenAI's new fundraising round could value startup at as much as $830 billion. क्यों? So I think what has happened is, and this is where there is a disconnect between us as end users and what OpenAI is now actually selling. I think most of their business is now enterprise driven, B2B. So all the API calls being made to the OpenAI platform, that's what's making them the money. Chat GPT is just that front end which ensures that all users know that this company is still around, right? OpenAI aims to raise up to 100 billion, potentially valuing the company at 830 billion to fund ambitious growth plans. Fundraising round early could value the company. ठीक है. So this fundraising round is still in the works. मतलब, so this is just basically guesswork at this point. And again, this is from Wall Street Journal, so it's coming from a very credible space. Next round, the round will present one of the biggest tests the company has faced since the public market's exuberance for AI spending waned. Okay, so spending has waned, scoured the world to build the pool of OpenAI's investors, and the company is now weighing a potential IPO. The Wall Street Journal previously reported. तो अब ये लोग IPO करेंगे, which is very typical of any startup that becomes too big or gets a lot of success. SoftBank has agreed to invest 30 billion, sold its Nvidia stake to fund the OpenAI bet, which doesn't make any sense to me. Me अगर neither. Nvidia पे तुम bet हटा रहे हो तो तुम OpenAI पे क्यों bet डाल रहे हो? This could mean though that OpenAI might be making its own chips or its I own. mean, from for $800 billion, you can do whatever you want. तुम्हें चिप बनाना है भाई, $800 billion कितनी कंपनीज है जो इससे ऊपर है?
नहीं नहीं, वो तो वैल्यूएशन आएगा ना बेस्ड ऑन दैट कंपनी। वो रेस कितना करते हैं वो तो इट विल बी मच लोअर। मतलब बट मच अगेन लोअर एज इन, फिर इट्स भी इट विल बी लाइक अच्छा, 10-20 billion dollars. it would value the company, it will raise 100 billion. Okay, so I mean 100 billion में they can create their own chipset, they can create their own iPhone probably. I mean, yeah, they can still do whatever they want with it, but for me, it doesn't make any sense that you want to reduce your stake SoftBank, in Nvidia, but you want to then invest it in OpenAI, which basically runs on SoftBank, Nvidia. SoftBank is run by a gambler. ठीक है, वो जब Oh, एनवीडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए था तब उसने खरीद सेल करा, जब एनवीडिया में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए था तब उसने खरीदा. ही इज अ गैम्बलर. यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट. who is SoftBank's owner? I want to see. Even I एक don't ही है. know. It's says it's SoftBank. It's owned. It's run by one guy. I forgot his name. Nahi, nahi. It's the founder is okay. Okay, got it. It's a Japanese person. Yeah, he's very famous. He Yeah. gets very. ऐसे क्या होता है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, जब भी कोई मार्केट एकदम पीक पे पहुंच जाता है ना, Hmm. तब ही स्टार्ट बाइंग एंड ट्राइंग टू Hmm. कंट्रोल. तो यही हुआ था जब, याद है, उबर, लिफ्ट, ओला, Hmm. इन सब की लड़ाई चल रही थी, एकदम Hmm. पीक लड़ाई थी. Right. तब ये आया, उबर की भी स्टॉक, उबर भी खरीदा कुछ परसेंट, लिफ्ट भी खरीदा, ओला भी खरीदा, सब कुछ खरीद लिया. एंड ही वांटेड टू कंट्रोल द मार्केट बेसिकली. एंड देन कुछ कुछ इसने चीज़ें करी, एंड हिज इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन वेरी रिस्की बेसिकली. Hmm. Risky मतलब ठीक है. Okay. Yeah. Okay. 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 हाँ, बट इन जनरल, हाँ, Hmm. इसकी बात करें तो, हाँ, मतलब अब क्या ही बताए. ओपन एआई, अगर अगेन हम फेयर मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, तो ओपन एआई के अराउंड काफ़ी हो गया. आई थिंक लाइक 800, आई थिंक नाउ इट्स 900 million वीकली एक्टिव यूजर्स. आई थिंक आउट ऑफ विच हाफ ऑफ देम आर इंडियंस. आई हैव नो डाउट, क्योंकि अभी मैं इंडिया गया था तो मेरे कज़न ने बताया कि इंडिया में चैट जीपीटी जो प्रो वर्जन है, फ्री फॉर अ ईयर फॉर एवरीबडी. जस्ट क्रिएट अ Oh अकाउंट. wow. That's सो just to get volume and train data, basically. बेसिकली दैट्स जस्ट वॉल्यूम, राइट. तो वो उन्होंने करा है, तो इनके नंबर्स 1 बिलियन तो रीच कर जाएंगे, आई हैव नो डाउट. अब 1 बिलियन वीकली एक्टिव यूजर्स, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में 5 या 6 प्रोडक्ट्स होंगे जिसके इतने हैं. मतलब मेटा, गूगल, दैट्स इट. सो अब, हाँ, आई वुड से कि यस, मे बी ओपन एआई इज वर्थ 100 बिलियन, 200 बिलियन, 300 बिलियन. बट इन सिलिकॉन वैली फैशन, ये एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा देते हैं हर जगह. और इन्होंने कहा हाँ जी, हम 800 बिलियन है. अब अगली बार आई वोंट बी सरप्राइज, एक साल बाद क्या है कि $1 ट्रिलियन स्टार्टअप. भाई, $1 ट्रिलियन में स्टार्टअप तो नहीं हुआ ना फिर. तो वो mature company हो गई. Like then everyone has to contend with that कि um, मतलब फिर वही है ये स्टार्टअप का. फिर वही है, तुम बज़वर्ड्स को जितना उनसे तुम जितना दूध निकाल लो. That's what I'm thinking, because if you're trying to value a company at 800 billion, that is not a startup. Like it's way beyond that. I don't even think I don't even think Sam Altman is calling it a startup anymore, is he? आई डोंट नो व्हाट ही इज कॉलिंग इट, क्योंकि कभी वो नॉन प्रॉफिट थी, फिर कुछ प्रॉफिट हो गई, फिर अब तो फॉर प्रॉफिट है. बहुत कंप्लीटली फॉर खिचड़ी प्रॉफिट. पकी हुई है. और फिर हाँ. सैम ऑल्टमैन से पूछो कि तुम कितना ओन करते हो, तो सैम ऑल्टमैन कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो बस एक मॉडेस्ट सैलरी लेता हूँ, मेरे पास तो कुछ शेयर्स वेयर्स कुछ नहीं है, मैं तो मतलब संत आदमी हूँ. और इतना हाँ, हरामी आदमी है. इतना बड़ा संत है यार, क्या बोले अब. जो संत होते हैं उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो संत है. बस इसी से समझ लो. The company has faced skepticism over computing deals it has fought that are worth hundreds of billions of dollars and issued a code red to beat back a growing threat from Google.
While OpenAI is set to burn more than 200 billion in cash to 2030, Google has low levels of debt and robust profits, which could make it easier to invest further in AI. I agree with that statement because, I mean, again, Google was a little late to the game, but we have to understand they were bound to win it. They just had to get their AI team in order. They have the most data. They are sitting on such a huge pile of search data, maps data, blah blah, this data, that data, emails. Matlab, and we have to remember they make their own processing chips. They're not relying on GPUs. They're not relying on external QPUs or anything. They have their own quantum processing units also. Eventually, I would say that Google will edge ahead and keep ahead. I think Google's plan pricing plan for their whole Gemini suite with Google One and everything, that's actually the cheapest. It's at about 250 CAD a year. Whereas ये Microsoft का अगर मुझे लेना होगा, then I think I'll have to pay 90 USD and then $20 per month for ChatGPT Pro. Because Copilot, okay, let's leave it. And I read some news also कि अभी Microsoft internally has reduced their budget for Copilot because Hmm. it's just not gaining as much traction as they thought it would. Again, I haven't confirmed it, so I can't say yay or nay. But let's see. News Corp, बाकी इसमें कुछ अच्छा लिखा है. Okay. Yeah, I think it's overvalued at this point. OpenAI का अगर IPO हो भी जाएगा, तो फिर IPO will follow an IPO's trajectory. It'll be overvalued, then it'll come down to reasonable levels, and then it will benefit some astute investors who are able to see what the moat is and if the company can hold on to it. यही होगा अगर IPO करेंगे. इससे ज़्यादा और क्या हो जाएगा. But yeah, overall in this whole AI race, I do see, at least in the space of generative AI and generative AI in terms of images, music, text, whatever, Google will win this game. कुछ भी हो जाए. And it's just they are the ones who revolutionize search. They have the most data on what people search for, what people look at, and they own YouTube. Yep. They own YouTube. Like people forget that's the first content creator platform that came about. Everyone else is struggling with this model. Instagram barely pays anything, from whatever I've been hearing. By the way, Um, YouTube is like billion people daily active users daily. Exactly, because YouTube ने जब से premium निकाला है, तब से तो people can just listen to their podcast, right? There's no friction left in Hmm. accessing a YouTube video. So It's actually a uh, great deal. yeah, it's amazing. So yeah, I think Google will be the eventual winner. I don't know if they're coming out with robots. I saw a video recently on Elon Musk posted it on X. Um, Robots are now performing in concerts and stuff in China apparently. वो मिल जाएगा कहीं पे तो डालेंगे. Anyways, guys, I think we have one more topic for today. उस पे touch करते हैं and then we can wrap this one up. मैं डालता हूँ. JD, please take over because ये तो तुम्हारा ही है. H1B strikes again. मतलब जब भी हाँ. कभी इसका Let me share my screen. you want, Uh, oh हाँ, you'll give you the right to do it, right? Share it. no, I वो think I present or can. invite में जाके हाँ, do it. If you are you should have the capability to. Yeah, yeah, yeah. So let's see if you can see it. Uh, You have to add it to the stage. मैं कर देता हूँ. Done. okay, thank you. So, yep, let me zoom in a little bit. So, I guess let's look at the news. So, क्या हुआ है? Uh, अभी काफ़ी रिसेंटली एक नया H1B का चेंज आया था कि एवरीबडी नीड्स टू पुट इन सोशल मीडिया अकाउंट, सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने डालने पड़ेंगे अगर उन्हें रिन्यू कराना है.
अब रिन्यू भी खाली अपने इंडिया में जाके करा सकते हो। तो लोगों ने कहा ठीक है, हम करेंगे। अब ज़्यादातर लोग कब वापस इंडिया जाते हैं? दिसंबर में। तो सबके सब गए, और जैसे ही वो गए, लोगों को, अगर कल इंटरव्यू उनका, तो एक दिन पहले उनका इंटरव्यू कैंसिल करके और 6 महीने बाद का कर दिया। अब इसकी वजह से लोग लिटरली अटक गए हैं। तो यहाँ पे अगर पढ़ सकते हो, तो इंडियन H1B वीज़ा होल्डर्स हु ट्रैवल टू इंडिया दिस मंथ टू रिन्यू देयर यूएस परमिट्स आर नाउ स्ट्रैंडेड when their interviews were cancelled. Now why were they cancelled? क्योंकि भाई अब उन्होंने सोशल मीडिया तो अकाउंट्स तो डाल दिए, अब उनको वेट करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। ये एम्बेसीज कह रही हैं। तो ये काफ़ी लिखा है, हंड्रेड्स पॉसिबली थाउजेंड्स of high skilled had appointments cancelled between December 15 and 26। तो ये इन लोगों का कटा है। और ये तो कहिए दिसंबर 15 से 26 का बता रहे हैं। अब लोगों को पता चल गया, तो लोग अपनी पहले से ही जनवरी और फरवरी के अपॉइंटमेंट्स भी कैंसिल करा रहे हैं या जा नहीं रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा हो गया है। तो अब इसमें लिखा है हाउ लॉन्ग इंडियंस हैव टू वेट। तो लिखा नहीं है, बट कुछ कह रहे हैं, देखो, ही हैड अपॉइंटमेंट्स December 17 and 23 but received an email कि has been rescheduled to July 2nd। मतलब सोचो, 6 महीने बाद। और मैंने तो सुना है कुछ कह रहे हैं कि दिसंबर 2026। तो अब तो वो अटक गए इंडिया में। तो ये आजकल काफ़ी चल रहा है। आम, बताओ, एनी थॉट्स अभिजीत? I mean, matlab, I'm just glad I'm not on H1B. And with all this kind of news that shows up again and again, I'm like, okay, moving to Canada was a sane choice to make. That's all I can say, because I don't, I don't, I don't think US is doing a right or a wrong thing. All I'm saying is, at least being here, being in the position that I am in, I just feel lucky when I see these kind of when I see this kind of news. मतलब ये तो चलता ही रहेगा, और ये समझ में आ गया था मुझे। जब भी ऐसा कुछ आता है, आई एम लाइक, हाश, हम तो ठीक है। बाकी जो करना है करे, यूएस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ये सब चलता ही रहता है। एंड पर्सनली स्पीकिंग, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट ओ अब हम सोशल मीडिया रिव्यू करेंगे। This has more to do with all the trade deal nonsense that's happening. So this is just another bargaining chip. ये बैक हैंड में यही हो, क्योंकि 6 महीने तक कौन सी कंपनी पेरोल पे रखेगी? अगर आप किसी बिग टेक के लिए काम करते हो, देन यू विल प्रॉब्ली रिटेन योर जॉब बिकॉज दे कैन जस्ट वर्क फ्रॉम देयर इंडिया ऑफिस। बट अगर आप किसी मिड साइज फर्म के लिए काम करते हो हु मे नॉट हैव एन इंडिया ऑफिस, देन व्हाट, दे विल जस्ट गेट लेड ऑफ। फिर दे फिर what uh, then they might be hoping that, okay, trade deals aage jayegi, because from what I've understood, India is not in a hurry to sign a trade deal. They're like, it, I mean, yeah, they're like कि ठीक है, जितना time लगेगा लगेगा. So it's another one of those, oh, now we'll do a social media review. Social media review ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रहा था, maybe to a lesser extent हो रहा था. But ये सब तो, you once you give your SSN, and anyway the US government issues you an SSN, they already know what's happening. They can already track your WhatsApp, मैसेंजर, आई मैसेज, जो भी है, जिनको लगता है कि उनके पास प्राइवेसी है, भाई किसी और से जाके पूछना। ये जो सोशल मीडिया रिव्यू है, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इसमें नया क्या है, that you have to change your profile to public. Are you telling me the US government can't just call up Google, Facebook, Twitter or whatever in the background and just say हमें इसकी कुंडली निकाल के दो? एक्चुअली ये मतलब किसको? ठीक है यार। एक्चुअली यू आर राइट, आई थिंक दिस Like, इज। I don't understand what's so new about this. ये this is just a way to this is
behind the scenes, this is to just try and have a deal as quickly as possible, because India as a country just posted an 8% growth with the US tariffs for this quarter. उसके पहले 7.8% था, अब कुछ 8% आ गया, मे बी 7.5 था उसके पहले, आई डोंट नो, बट ये ऐसा क्या है कि ये पहले नहीं हो रहा था? मैं यूएस बॉर्डर क्रॉस करता हूँ, मेरे पास नेक्सस कार्ड है, जब मेरा नेक्सस कार्ड लिया था तो 3 महीना लगा था उसमें, एंड ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज रिव्यूड, एंड एवरी टाइम एनीथिंग अपडेट्स अबाउट माय सिचुएशन, आई हैव टू इन्फॉर्म द यूएस गवर्नमेंट, go to the website, change whatever I need to change, जैसे एड्रेस बदल गया हो या सिटीजनशिप बदल गई हो, सब वो डालना पड़ता है. And which is fair. I'm not saying it's an unfair practice. I'm just saying it's a fair thing. अगर वो आपको as a trusted traveler trust कर रहे हैं, they are giving you an access to cross the border quickly, then they have a right to research you in the background. But what I'm saying is this research was already happening. मेरा लिंक्डइन प्रॉब्ली चेक हुआ था, मेरी यूट्यूब प्रोफाइल चेक हुई होगी, मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी जो भी है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री तो आप देते ही हो, एड्रेस हिस्ट्री भी आप देते हो, वो सब भी डबल वेरीफाई हुआ होगा. तो इसमें ये नया क्या डाला है जिसके कारण दे डिसाइडेड टू जस्ट मूव all interviews out 6 months? I just think this is a front. This is all, and these are things happening way above our pay grade, right? Again, I can only hypothesize. I cannot say यही है या ये नहीं है, but मुझे the reasoning they have given, I'm like, ये सब तो तुम्हारे पास पहले भी था ही, मतलब इसमें क्या नया आ गया कि ओ यू हैव टू चेंज योर प्रोफाइल टू पब्लिक? ऐसे भी ठीक है, डाल दो, मतलब आई मीन, yeah, I just feel glad कि I don't have to be in that race anymore. कि ठीक है, मतलब when you move out of the US, it's always a trade-off. You move to a different place. But overall, when I see news like this, I'm like, at least for now, the trade-off is working in my favor. यही मैं बोल सकता हूँ उस पे. Yeah. JD, any other thoughts? नहीं, आई मीन या आई एम ऑल्सो थैंकफुल कि हाँ, हम लोग हम लोग भी H1B पे थे, कुछ 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 चीज़ें हुई इसलिए हम कनाडा आए. और अब तू भी सोच रहा है यूएस कभी मूव होएगा, मैं हो गया हूँ, बट क्योंकि मैं H1B पे नहीं हूँ तो ये सब चीज़ों से मैं शील्डेड हूँ. आई थिंक बहुत अभी एडवांटेज है अगर तुम कैनेडियन हो और तुम आ रहे हो यूएस में. तो बिकॉज ऑफ द यूएस कनाडा ट्रीटी, like 99% of the visa shit that Hmm. happens to other countries, they don't apply. तो Oh, that's also up for review next year. अब देखते हैं क्या होता है. Kazma, हाँ भाई, CUS, and सही then बात है, सही बात है. तो टच वुड, let's इसलिए मैं कह रहा हूँ टच वुड, होपफुली touch wood. ये रहे. Hmm. और वरना तो फिर जय माता दी, आएंगे हम वापस कनाडा काम करने. Yeah, I mean, ठीक है, यहाँ पे भी सब. Anyway, I'm going to do a more detailed live on this, but there's an IMF report which is basically pretty blatantly stating that Canada was not as badly affected as they thought because of the tariffs. But again, that is because Canada rolled back most of its retaliatory tariffs, which I think makes sense. मतलब, Canada should do what they feel is good for Canadians. Baki US will do what it feels is good for Americans. So, anyways, guys, थोड़ा depressing ज़्यादा हो गया. Let's quickly leave you with one last. हम लोग कुछ funny दिखाते हैं अब आपको, जिसमें, अरे किक फ्रॉम स्टूडियो नहीं यार, अच्छा हाँ ठीक है. तो आई एम गोना शेयर द स्क्रीन फॉर दैट वन sort of bonus topic. I know थोड़ा हो गया है, but yeah. Meanwhile, in Germany and in mainland Western Europe, one of the most developed countries in the world, the home of Volkswagen Group, Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Germany's bizarre trend of training imaginary dogs क्या? has the internet doing a face palm. मतलब What? कुत्ता नहीं है इन लोगों के पास, बट अब इन्हें बस घुमाना है.
So they pretend that they are taking a dog for a walk at a course. Let's see if I can, if I share the video, will it give me the sound or not? Oh, ये तो photo है. Okay. So yeah, basically you see this person, they are holding a leash. It's an हाँ imaginary dog. So the हाँ, dog exists, but in an imagination. मतलब ठीक. I'll keep my mouth shut. तो But भाई स्ट्रेंजर थिंग्स वाली चीजें चल रही हैं. exactly, अब वो घुमा रहे हैं कुत्ते. अबे यार. मतलब यही होता है when you don't have any problems, you manufacture, you try to fix something that is not broken. I think this is just a, इन्होंने लिखा है ये बायोटाइड, ये बोटाइड मारा है. In Germany, hobby dogging is becoming popular, which consists of walking imaginary dogs. Sometimes I feel bad for Europe, but then you see this kind of stuff instead of peeps starting a family, and that feeling goes away, which is true. I mean, इतना ध्यान तो अपने बर्थ रेट पे ही दे लेते तो कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती. But yeah, this is what I wanted to leave people with. The world is getting crazier. Yes, no. And I think, think there are many reasons for the world getting crazier, and this is definitely one of them. The trend's roots are in Bad Friedrichshall, Germany, where 65-year-old dog trainer Barbara Gerlinger started hobby dogging. Gerlinger is unbothered by the ridicule, focusing on her structured courses instead. ठीक है, JD, let's plan a trip. हम, let's do double date. हम we'll take our wives along to Germany, trip पे जाते हैं. ये हॉबी डॉगिंग करके आनी है मुझे. अब प्रॉब्लम क्या है, अगले साल से ETA लगाएगा यूरोप, उससे पहले जाना है हमें. ठीक है बस. guys, this is what we had. JD, do you have any thoughts on this? No thoughts, this is too funny. हॉबी डॉग है यार, शर्म करो यार. Hobby dogging was born from a casual joke at a local clubhouse. भाई casual joke ही छोड़ देना चाहिए किसी कुछ चीजों को. You don't have to realize every bloody conversation you have. Ay. Yeah, guys, just type hobby dogging on any social media app, Instagram, Google, whatever. You'll get you'll get more information on this innovative item that has happened. Anyways, guys, please like, share, subscribe, spread the word, put comments. अच्छा लगे तो वो भी comment में डालो, गाली देनी है तो वो भी दो. But yeah, hope you have a great rest of the Sunday. अगर आप North America से हो, अगर आप India में हो तो hopefully you're already asleep. But yeah, have a great holiday season, everyone. And yeah, signing off. Abi, JD. Bye bye. Thank you.